Then Elon Musk, congratulations on a great beginning. फिर Elon Musk ने सबको लिखा दो अपने, we are outmanned and outgunned by ridiculous margin by organizations you know well. But we have right on our side and that counts for a lot. I like the odds. This is Elon Musk's mail to all OpenAI employees. कि ठीक है, कुछ लोग उनके गए भी थे. Google was successful in their attack. But like Elon Musk is like, congratulations on a great beginning. जो लोग रुके हैं, we are outmanned and outgunned by a ridiculous margin by organizations you know well. But we have right on our side. वो कह रहे हैं ठीक है, वो जो मर्जी करें, हम तो सच का साथ दे रहे हैं. And that's the right thing. And that counts a lot. I like the odds. And then he's like, हमें तो ऐसे ही अपनी weakness को इन्होंने अपनी strength बना लिया. But we want to play with the odds. Our most important consideration is recruitment of best people. The output of any company is the vector sum of the people within it. Elon and his scientific terms. People say sum of the people, like vector sum of the people. Alignment of the people is very very important. 10 अलग अलग directions में काम करोगे, 10 लोग का sum भी 0 आता. If you are aligned towards a single goal, vector sum of an organization, vector sum of the people is actually the output of an organization. If we are able to attract the most talented people over time and our direction is correctly aligned, then OpenAI will prevail. To this end, please give a lot of thought to who should join. If I can be helpful with recruitment or anything else, I am at your disposal. I would recommend paying close attention to people who haven't completed their grad or even undergrad, but are obviously brilliant. Better to have them join before they achieve a breakthrough. Looking forward. Then Elon Musk suggested, don't go for experienced people. Go for people. I recommend paying close attention to people who haven't completed their grad, basically internship. कह रहे कॉलेज से उठाओ, खुद डेवलप करो अपना टैलेंट, वहां से बनाओ. We are playing right and not just us, all of you. तुम देख ही रहो, I guess lot of people come, you are seeing what's happening and how we are growing. फिर उसके बाद इलॉन मस्क भी कम नहीं है, कितना फेवर कर रहे हैं इनको. जो उसको ईमेल आ रहे हैं फॉरवर्ड करता है सैम वगैरह को, कॉन्ग्रेट्स ऑन द फैल्कन 9, एंड वो सारे चीजें सैम को भेजता है नेक्स्ट उसमें ना. एंड देन ऑल्सो कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क. इलॉन मस्क डिजाइंड द कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क, और उसके बाद उसने 3 स्पेशल केसेस, जीडीबी, ग्रेग, एलिया एंड ट्रेवोर, कहते इन तीनों की कॉम्पेंसेशन हम डिजाइन ही नहीं करते, इनको जितना चाहिए वो ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 लोग मेरे को कंपनी में चाहिए, बाकी की कॉम्पेंसेशन का हम ये फ्रेमवर्क बना देते हैं. That's how he made a lot of people stay. And then उसके बाद इसने the plan is to keep a mostly flat salary and use the bonus multiple as a way to reward strong performers. And some notes, so some salary data points. और इसने गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, डीप माइंड सबकी सैलरी निकाल के सारा डेटा भेज दिया एलॉन ने सैम को. मतलब आई एम सो सरप्राइज टू सी कि कितना ज्यादा ग्राउंड लेवल पे इन्वॉल्व था एलॉन मस्क हिमसेल्फ इन क्रिएटिंग द कंपनी. So if founders think, that's a lesson for everybody. Founders, new employees, interns, leaders, business managers. If you think कि नया प्रोडक्ट बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के बन जाएगा, not possible. You have to work on the ground every time and you need to build a, star performer in your portfolio, in your company. You have to work. You have to go. And then they also discussed कि Elon से कि can you put this out on the Twitter for us? And Elon does put. बहुत सारी चीजें जो उनके माइंड में आइडिया आता था ना, they just used to tell Elon Musk to put it out. रिस्पॉन्स आएगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे. और यहाँ पे इतने सारे फाउंडर्स इतना सारा टाइम लगा देते हैं, नेवर टेस्ट देयर आइडिया इन द मार्केट. सो व्हेन वी आर क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स, दैट्स आल्सो वन ऑफ द लेसन. रिलीज इट आउट, आइडिया को थोड़ा सा प्रोटोटाइप बना के रिलीज इट आउट. इफ पीपल आर लाइकिंग इट, पीपल आर विलिंग टू पे फॉर इट, then do the complete development. Otherwise pivot. Don't waste your precious life and life के years in just building something which nobody wants to buy. Make sense? Yes. And be flexible enough. Yes, that's all.